Namaskar, Excellency. Are we ready to start? Yes, please. Yeah. Honorable Mr. Prime Minister, Namaskar. On ilo saada tavata teidät ensimmäisenä. It gives me great pleasure to meet you for the first time in this virtual forum and together strengthen the partnership between Finland and India. Together with other countries, we have gone through difficult and painful times for over a year. The top item on the agenda of all heads of governments is the COVID-19 pandemic. I want to recognize the efforts of India in extensive vaccination program, and you are among the world leading vaccine manufacturers. In Finland, we're also developing corona vaccines, among them a nasally administered vaccine. This could possibly help in vaccine distribution also in developing countries. The EU is the world's biggest exporter of coronavirus vaccines and provides funding to vaccination programs in developing countries. In Finland, we have had our corona situation under control, but especially the virus mutations have led to increasing rates of infections, and we have had to introduce further restrictive measures. Our aim has been from the beginning of the crisis to prevent the spread of the virus, to secure the capacity of healthcare and protect risk groups especially. Our aims have remained the same, but we have had to adjust our strategy always when we gain new knowledge of the virus and its behavior. We have also managed with less damage to our economy compared to many other European countries because we have kept the epidemic under control. Our next test is to rebuild our economy strong again and reform its structures to support green, sustainable and digital growth. The pandemic has reminded us that we have to live together with nature. The nature becomes more and more into contact with humankind, and I fear that if we don't change our behavior as humankind to become more sustainable, we will face even worse crises in the future. Simultaneously, when striving for biodiversity, we have to find ambition to prevent climate change. Here we are together too. We have to act together to solve the greatest problem and threat facing humankind. Finland is part of EU's climate policy, and we are preparing for the COP26 climate summit in the autumn. Our national goals are clear. Finland aims to be climate neutral and by 2035, and we want to be the first welfare state that is fossil-free. Finland has good knowledge in sustainable development, and we want to, through green technology, solve climate change problems. I see that we have good commercial cooperation possibilities with India in the field of technology and research. I expect the fresh memorandum of cooperation between the Finnish and Indian ministers of environment that it will be implemented ambitiously. Finland and India are natural partners in the field of new technology. Mobile technology revolutions such as 3G, 4G and 5G were sparked partially with Finnish know-how, and digitalization is a great opportunity for us. Finns and Indians cooperate in the development of 6G, quantum technologies and developing AI, and I wish that our meeting now encourages to deepen cooperation. Finnish know-how in technologies is based on high-quality education and equality. India is currently reforming its education system, as far as I understand. And the development of Finland from a poor rural country to a modern welfare state has been enabled by high-quality education. What is even more important to the success of Finland is equality and trust based on that. Finnish women gained universal voting rights with men and the right to stand for election very early on global stage. Finland has partially had a difficult history, but it has taught us that success as a society and economy requires including everyone. Women's and girls' rights and position have been the center of Finland's international activities. Even now, in the midst of the pandemic, we have to take care of the realization of equality between genders. The field of cooperation where I believe can do a lot together with India and learn from each other. We can promote international
a rule-based system, sustainable development, and combating climate change together. Honorable Prime Minister, I invite you now to take the floor for your introductory remarks. एक्सेलेंसी नमस्कार, आपके रिमार्क्स के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। एक्सेलेंसी, कोविड-19 से फिनलैंड में हुई जानहानि के लिए पूरे भारत की ओर से मेरी हार्दिक संवेदनाएं। आपके नेतृत्व में फिनलैंड इस पैंडेमिक को कुशलता से हैंडल किया है, इसके लिए मैं आपको बधाई देता हूं। एक्सेलेंसी, इस पैंडेमिक के दौरान भारत ने अपने डोमेस्टिक संघर्ष के साथ साथ विश्व की जरूरतों का भी ध्यान रखा है। पिछले साल हमने 150 से अधिक देशों को दवाइयां और अन्य आवश्यक सामग्री भेजे थे और हाल में हमने लगभग 70 देशों को भारत में बनी वैक्सीन की 58 मिलियन से अधिक डोजेज पहुंची है। मैं आपको आश्वासन देना चाहता हूं कि हम अपनी क्षमता के अनुसार पूरी मानवता को आगे भी सपोर्ट करते रहेंगे। एक्सेलेंसी, फिनलैंड और भारत दोनों ही एक रूल्स बेस्ड, पारदर्शी, मानवतावादी और लोकतांत्रिक वैश्विक व्यवस्था में विश्वास रखते हैं। टेक्नोलॉजी, इनोवेशन, क्लीन एनर्जी, एनवायरनमेंट, एजुकेशन ऐसे क्षेत्रों में हमारे बीच मजबूत सहयोग है। पोस्ट कोविड काल में वैश्विक आर्थिक रिकवरी के लिए भी सभी सेक्टर्स बहुत महत्वपूर्ण होंगे। क्लीन एनर्जी के क्षेत्र में फिनलैंड ग्लोबल लीडर है और भारत का एक महत्वपूर्ण पार्टनर भी है। और आपने जब क्लाइमेट की चिंता की तो मैं कभी कभी हमारे मित्रों को मजाक में बताता हूं कि हमने प्रकृति के साथ इतना अन्याय किया है और प्रकृति इतनी गुस्से में है कि आज हम सभी मानव जात को हमको मुंह दिखाने लायक रखा नहीं है और इसलिए हम सबको मुंह पे मास्क बांध करके अपना मुंह छुपा करके घूमना पड़ रहा है, क्योंकि हमने प्रकृति के साथ इतना अन्याय किया। ये मैं अपने साथियों के बीच में मजाक में कभी कभी बताता रहता हूं। भारत में हमने क्लाइमेट संबंधी उद्देश्यों की प्राप्ति के लिए महत्वाकांक्षी लक्ष्य निर्धारित किए हैं। रिन्यूएबल एनर्जी में हमने 2030 तक 450 गीगावाट इंस्टॉल कैपेसिटी का लक्ष्य रखा है। अंतर्राष्ट्रीय सहयोग बढ़ाने के लिए हमने इंटरनेशनल सोलर अलायंस और कोएलिशन फॉर डिजास्टर रेजिलिएंट इंफ्रास्ट्रक्चर जैसे इनिशिएटिव भी लिए हैं। मैं फिनलैंड को आईएसए, आईसा और सीडीआरआई में जुड़ने का आग्रह करता हूं। फिनलैंड की क्षमता और विशेषज्ञता में इन अंतर्राष्ट्रीय संस्थाओं को आपकी जो महारत है इसका लाभ मिलेगा। एक्सेलेंसी, फिनलैंड न्यू और इमर्जिंग टेक्नोलॉजीज, डिजिटल इंफ्रास्ट्रक्चर, एजुकेशन और स्किल डेवलपमेंट के क्षेत्र में भी अग्रणी स्थान रखता है। इन सभी क्षेत्रों में हमारे बीच सहयोग की संभावनाएं हैं। मुझे प्रसन्नता है कि आज हम आईसीटी, मोबाइल टेक्नोलॉजी और डिजिटल एजुकेशन के क्षेत्र में एक नई पार्टनरशिप घोषित कर रहे हैं। हमारे शिक्षा मंत्रालय भी एक हाई लेवल डायलॉग आरंभ कर रहे हैं। मुझे आशा है कि आज की हमारी समिट से भारत फिनलैंड संबंधों के विकास में और गति आएगी। एक्सेलेंसी, आज ये हमारी पहली मुलाकात है। अच्छा होगा अगर हम रूबरू मिल पाते, लेकिन पिछले एक साल में हम सभी को टेक्नोलॉजी की मदद से मिलने की आदत बनती जा रही है। लेकिन मुझे प्रसन्नता है कि हमें शीघ्र ही पोर्तुगल में इंडिया ईयू समिट
और डेनमार्क में इंडिया नॉर्डिक समिट के दौरान मिलने का मौका मिलेगा। मैं आपको भारत की यात्रा करने का भी निमंत्रण देता हूं। जब भी सुविधा हो आप अवश्य भारत आएं। मैं प्रारंभिक बात को यहीं पर समाप्त करता हूं और फिर अगले सत्र में हम आगे की बात करेंगे। बहुत बहुत धन्यवाद।